अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TV21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि गर्मा में बर्फ की कटौती नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी रुकन असेंबली ने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि वो स्मगलर से मिले हुए हैं। खबरें तफसील से। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोऑर्डिनेशन का एक इजलास मेयर जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन की क़यादत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान असम्बली, स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कई मसाइल उठाए गए। स्ट्रक्चर पे कैसा है देखिए, थोड़ा बिल्डिंग परमिशंस पे क्वेश्चन है कि आप एनी इश्यूज जब मैं अलाउ करूंगा आपने अलाउ करूंगा। मामा आप स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करिए, माइक आपका ऑन है, आप स्टार्ट करिए प्लीज। जुल्फिकार साहब। अरे जनाब मेयर साहब, मैं क्वेश्चन मैंने जनरल बॉडी में जी जुल्फिकार साहब की आवाज थोड़ा बोले। मेरा क्वेश्चन था मेयर साहब कि रिसेंटली GHMC एक्ट में एक अमेंडमेंट आया मेरे साहब। वो अमेंडमेंट था सेक्शन 278 में नया एक सेक्शन इंसर्ट किए, सेक्शन 278A 1 और 2, जिसमें कमिश्नर साहब को लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। क्योंकि पहले जो एक्ट था सेक्शन 279, सेक्शन 269 के तहत डिस्ट्रेस हम कर सकते थे, लेकिन उसमें लिमिटेशन नहीं था। लिमिटेशन जो है सबका लिमिटेशन एक्ट के थ्रू जाना पड़ता था, जो 3 साल तक ही था। लेकिन सेक्शन 269 में भी एक सब सेक्शन 3 भी इंसर्ट किए, जिसमें कमिश्नर साहब को पावर्स दिए कि प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं और 9 साल तक केस डाल सकते हैं। 278A के तहत 9 साल तक केस डाल सकते हैं। 3 साल के अंदर जो है सो डिस्ट्रेस एंड सेल कर सकते हैं और 6 साल तक प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि जो नए अमेंडमेंट के तहत ये एक्ट जो है सो 5 अगस्त 2013 को चेंज हुआ, जो डिस्ट्रेस के लिए कई लोग ऐसे थे जिसके 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या ये लिस्ट स्टैंडिंग कमेटी के सामने दिए थे क्या? तो यहाँ पर यह दिया गया कि अभी DMCs, जोनल कमिश्नर्स लिस्ट बना रहे, उसका स्टैंडिंग कमेटी में देंगे। लेकिन आज जनरल बॉडी में डिफॉल्टर्स लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द डेटाबेस प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स ऑफ मोर देन 3 years इस ट्यून जो अमाउंट दिए हैं 631 करोड़ और वो एब्स्ट्रैक्ट एनक्लोज किए। जब एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास था, आज मीटिंग में एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो है सो आपको 4 महीने पहले क्यों नहीं दिया गया जबकि एक्ट में अमेंडमेंट आया? अगर 4 महीने पहले अगर देते तो कमिश्नर साहब के जो पावर्स थे डिस्ट्रेस एंड सेल के, डिस्ट्रेंट एंड सेल के, अगर वो 3 साल पूरे हो गए उसके, तो आप उसका अटैचमेंट करके सेल नहीं कर सकते। अगर 3 साल, अगर 4 महीने पहले से अगर आज तक अगर उसके 3 साल हुए तो उसके जिम्मेदार कौन है? जबकि आप यहाँ पे जनरल बॉडी में एब्स्ट्रैक्ट दिए हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडिंग कमेटी के सामने क्यों नहीं रखे? मेरा सवाल यही था कि आज कितना लॉस हो रहा। ऐसे कितने लोग हैं जो एक्ट के बाद में
जिसका एरिया, जिसका टाइम 3 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम पावर दिया गया है मेरे साहब कमिश्नर साहब को फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रस नहीं किए तो आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते तो 9 साल के बाद 9 साल तक आप केस डाल सकते। आप अटैचमेंट सेल, और सबसे अच्छा डिस्ट्रस में इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप सेल कर सकते हैं। अगर उसके पास कार रही, कोई टैक्स अगर नहीं भर रहा, कोई मेजर डिफॉल्टर है, तो वैसे के लिए कर सकते आप। तो वो क्यों नहीं आपके सामने पेश किए? ऐसे कितने करोड़ के हैं ये 3 साल के जो कम हो रहे हैं? जरा सवाल करने के बाद मैं फिर दूसरा सवाल करूँ, उसका जवाब दीजिए। बोलिए आप, आज आपके सामने अभी जनरल बॉडी में रखे हैं ये लोग, लिस्ट हमारे जनरल बॉडी में दी है, तो ये स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं रखे साहब? ये चीफ मिनिस्टर डॉक्टर किरण कुमार रेड्डी ने पेप्सी की जानिब से मुनक्कद एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में आइंदा गर्मा में बर्फ की कोई कटौती नहीं होगी। इन्होंने कहा कि पूरी तरह तैयारी कर ली है। In all the big states, Andhra Pradesh is going to have the least cut, even if it is going to be there. To my knowledge, till now, there is no cut, going to be no cut even in the summer. We are prepared even in the summer that there will be no electricity cut. And still, I have got 7,000 megawatts of capacity of electricity generation lying vacant due to lack of gas. Once gas comes, we will be we will be having excess power like no one in this country has. That is the capacity. It is installed capacity. 40,000 crores has installed capacity is been invested. It is lying vacant due to lack of gas. I think Government of India should start thinking very positively about how they are going to overcome this gas problem and D6 and other problems, and that is the cause of our concern. Once electricity is available, I don't think you will have a better state than Andhra Pradesh. I thank Pepsi for coming here. I am very fond of Pepsi for one thing. Both industries, last week we put the foundation for Cadbury's. Cadbury's, not only it's good to eat, it's going to be helpful to the farmers by procuring they require about 10 lakh liters of milk every day in 5 years to come. About 200 tons of sugar every day from the sugar factories. I think Pepsi is also going to require mango pulp and other pulp from the farmers. So indirectly this is going to help the farmers. Mango pulp, nearly about 2 lakh tons, metric tons a year they are going to purchase from, and that is going to help the farmer to get a better price. What is going, it is, you are not talking of Pepsi as a cool drink or a beverages which is going to help only people who are going to drink. This is going to help the farmer to realize better price. This is going to help overall economy of that district and of that state is going to improve because of that. I welcome you here once more, and you can convey my regard. I request you to convey my regards and my request for trying to make this their investment destination in the country. Thank you. कांग्रेस पार्टी रुकन असेंबली डॉक्टर शंकर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि वो स्मगलर से मिले हुए हैं। అసెంబ్లీకి రాలేదయ్యా, ఏది ఎర్రచందనం ఉంది ఫైరింగ్ అయ్యి వాళ్ళు స్మగ్లర్స్ ఇద్దరు ఫారెస్ట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లను చంపేసిన సంఘటన, 3 ఇంజూర్డ్ అయినది. ఆ రోజు అసెంబ్లీలో రచ్చ రచ్చ అవుతుందని తెలివిగా మానేసాడు, ఎగగొట్టేసాడు. ఎందుకు ఎగగొట్టిండంటే స్క్రోలింగ్ మీడియాలు ఇప్పించుకున్నాడు. ఆయన బీమార్ అయిందట. ఏం బీమార్ అయినవా? నీకు డిప్రెషన్ అయింది, మెంటల్ డిప్రెషన్ అయింది ఆ రోజు. మోషన్స్ పెట్టినాయట అని చెప్పుకున్నాడు.
నీకు మోషన్స్ కాదు, నీకు పరేషాని పాగల్ ఖానాలాగా అయిపోయింది. అసెంబ్లీకి పోతామంటే తాషా అవుట్ చేస్తారు అన్ని అపోజిషన్. కానీ బాధకరమైన విషయం ఏంటిదంటే ఆయనకు ఏ డాక్టర్ చూడలేదు, ఏ వ్యాధి రాలేదు. ఏ డాక్టర్ చూసిండో చెప్పానండి? ఎంక్వైరీ చేస్తే అంత బయటపడుతుంది. నీవు దాని వెనకాల ఎవరు ఉన్నారనే దాని విషయంలో ఎర్రచందనం యొక్క స్మగ్లింగ్ దాని వెనకాల ఎవరు ఉన్నారనేది గతంలో ఉన్న డీజీపీ దినేష్ రెడ్డి గారు, నీ తమ్ముళ్ళు ఏ విధంగా సంతోష్ వాళ్ళంతా ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ల్యాండ్ ఇష్యూస్లో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ దాంట్లో, తర్వాత జిల్లాలో జరుగుతున్న అవకతవకలు ఇంక్లూడింగ్ ఎర్రచందనం దాని విషయంలో అనే విధంగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. విన్నారా? అన్ఫార్చునేట్ అది ఆ రోజు అసెంబ్లీలో రచ్చరచ్చ అయిపోతుంది అనే దీంతోనే భయానికి నువ్వు రాకుండా అసెంబ్లీని నడవనియకుండా అదే करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर जनरल ए.के. खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ चेक पोस्ट पर दावे किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने दावे करते हुए 7 लाख रुपए जब्त किए, चंद अरेजी मुलाजिमीन को हिरासत में लिया। కొన్ని అక్రమాలు బయటపడ్డాయి. అక్కడున్న అధికారులు తర్వాత చెక్ పోస్ట్ లోపల మొత్తం 7 లక్షల వరకు అన్అకౌంటెడ్ క్యాష్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కువ పబ్లిక్ తర్వాత ప్రభుత్వం ఆదాయం ఎక్కువ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ పైన ఆధారపడి తప్పకుండా దానికి జిల్లా అధికారులు ఆ శాఖలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెగ్లిజెన్స్ నేను చేయాల్సిన పని నేను వాళ్ళని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాల్సింది నేను పెట్టుకోను. అటువంటి ఏదైనా సరే తప్పే అవుతుంది. सालारजंग म्यूजियम के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। प्रोफेसर अकबर अली खान और उर्दू एकेडमी डायरेक्टर जनाब सैयद अब्दुल शुक्र ने खिताब किया। इस मौके पर कसीर तादाद मौजूद थी। इसमें चाहिए उर्दू करना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं? ये गौर करने की जरूरत है। यहाँ पर चाहिए आप पहले अपने घर से उर्दू शुरू कीजिए। हम पढ़ा रहे हैं उर्दू अपने बच्चों को, इसकी वजह क्या है? और ये मुतमव्विल तबके को देखकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन का तबका है वो लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। वो कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल है? आज ये टीचर्स, अनट्रेन्ड टीचर्स, इंटरमीडिएट फेल टीचर्स, ग्रेजुएशन फेल टीचर लोग उनको तालीम दे रहे हैं। वो टीचर की बुनियादी सही नहीं है तो बच्चे की रह रहा था, आगे जाके वो ड्रॉप आउट हो जाता है। आप उर्दू मीडियम, अगर उर्दू मीडियम स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप उसके लिए फाइट कीजिए। उर्दू मीडियम में असातिज़ा नहीं है तो आप फाइट कीजिए। आपके कितने प्राइवेट उर्दू मीडियम स्कूल है आंध्र प्रदेश में? रिटायर्ड होते टीचर खत्म, पोस्ट अबालिश। कई मसाले हैं एडेड स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर। तो ये सारे चीजों को हमको जरूरत है, हमारा फर्ज है, क्योंकि हम उर्दू से वाबस्ता है, हमारी मादरी जबान उर्दू है और हम उर्दू मीडियम में तालीम हासिल कर बराबर नुमाइंदगी करना चाहिए, रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो। पे माली ताउन करती उर्दू अकादमी। आप अगर किताब छपाना चाहते हैं तो 10-12 हज़ार थे तो आपके 12-15 हज़ार रुपये माली ताउन उसके लिए जो है फ्राहम किया जा रहा। उर्दू किताबों पर जो प्रिंटेड बुक्स हैं, मजबूआ किताबों पर इनामात दिए जा रहे हैं। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है और सारी ऐसी कई स्कीमात है जो है। ये स्कीमात अपनी जगह है, लेकिन बुनियाद क्या है हमारी? आज देखिए सारे आंध्र प्रदेश में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, सातवाहना यूनिवर्सिटी में, तेलंगाना यूनिवर्सिटी में, अब और आपके एसवी में है, आंध्रा में है, सारे यूनिवर्सिटीज में उर्दू डिपार्टमेंट में तलबा की तादाद क्या है यूनिवर्सिटी? राजीव वकीला स्कीम के तहत तलबा को कंप्यूटर की तरबियत दी जा रही है। इस मौके पर डायरेक्टर राकेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तलबा को तरबियत के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इन्हें मुलाजिमत दिलवाई जाएगी। तरबियती कैंप का Any questions you want to ask us? You ask. Sunday no yaar. We are thinking to give a break to you. Festivals की गवर्नमेंट की हॉलिडे होता है, मैंने हॉलिडे होता है. That will be decided by my friend of the city. Last time, Mr. Mukram.
have started this kind of programs. Okay? So we'll be giving you the time according to your batch, according to your subject which you have chosen. Corporation and Domalgura corporate are also supporting us like anything. So these premises is government premises, you know, right? సభకు విచ్చేసిన విద్యార్థులకి దోమల్గూడ నాయకులకి ఇన్ఫోటెక్ డైరెక్టర్ గారు ముక్రమ్ గారు అనేక అభినందనలు తెలుపుకుంటున్నాను. దోమల్గూడ NSTUI सदर पी राजू रतन ने आज स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो इलेक्शन 2014 जारी किया और वो इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई. Today we are releasing NSUI Suggestion Student Manifesto as per the directions of Rahul ji. He initiated a very good and important program which benefits students and which involves students in the direct politics. So each and every student has a good opportunity to suggest what they need in education or in sports, etc. in different categories and change the system what Rahul ji wanted. Rahul ji started a national program with a special team called Quality and Inequality of Education, because there is somewhat lack of good education. So he wants to change that system and he wants to give a quality of education to each and every student in India. So I ask each and every student to please participate in this program and make it a grand success and be a part of it. बहुजन पार्टी सदर यू कृष्णा स्वरूप ने एपीएनजेएस सदर अशोक बाबू से मुलाकात की और इनकी हिमायत करता है. High Court of Andhra Pradesh. Now we are coming and will coming and participated in Samaikandra General Conference, all the party conference. We are meet and will inform to the Mr. Ashok Babu, APNGO President, but they will not cooperate. They will not allow them my express opinion in the Samaikandra conference. They have no support to the Dalit leadership. They have no support to the. They are not entered in the Dalit leadership. They are only Kamma, Retla, Bhuswamula, the landlordship leadership. It is a pre-planned to stop the United Andhra Pradesh. They are Telugu Jati Vidrohulu, Chandrababu Naidu, Kiran Kumar Reddy ఆధ్వర్యంలో ఈ సంఘం నడిపిస్తుంది. సమాఖ్యాంధ్ర సంబంధించిన ఉద్యమ కార్యాచరణ లోపల ఏమీ తీసుకోలేదు. మేము మాట్లాడాం కానీ మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. మమ్మల్ని అవమానించారు, మాట్లాడి వద్దని చెప్పారు, మా గొంతు నొక్కారు. అసలు దళిత ఉద్యమాన్ని, దళిత యొక్క నాయకత్వాన్ని, దళిత లీడర్షిప్ను కూడా ఈ సమాఖ్య పరిరక్షణ వేదిక వాళ్ళు ఆహ్వానించలేదంటే వీళ్ళ కమ్మ దురహంకారం, రెడ్ల దురహంకారం ఎంతో భయంకరంగా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మేము ఏమిటో చెప్తున్నాం, ఏపీఎన్జీఓ అశోక్ మేము సవాల్ చేస్తున్నాం. త్వరలో మేము అసెంబ్లీ ముట్టడిస్తాం. అన్ని రాజకీయ పార్టీ అవసరమైతే జగన్ కానీ, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు అన్ని పార్టీలు కూడా కలిసి త్వరలో సమాఖ్యాంధ్ర రాజకీయ చేసి కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ సందర్భం తెలియజేస్తున్నాం. ఇది మమ్మల్ని మా గొంతు నొక్కి దళితుల యొక్క నాయకత్వాన్ని రానికుండా ఈ కమ్మారెడ్ల ऑफिस में सदर अशोक बाबू की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ. तमाम सीमा आंध्रा कायदीन ने शिरकत की और ऐसा फैसला लिया गया कि रियासत तकसीम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी. Today we have convened all party meeting. It's a successful meeting. So far this exercise is not made by anybody. The attempt is very successful and it is agreed by one and all to oppose the division bill in the assembly and to evaluate a common strategy within the lines of the party principles and also to support the association to be proposed by the Samaikandra Parishad Vedika and also to sign affidavit according to the format designed by each party
and also to meet the president at the appropriate time to oppose the bill. These are the things we discussed, and it is agreed by one and all to support the all items which are concluded. नाजरीन, फिर एक बार देखते हैं सुर्खियाँ। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गर्मा में बढ़ती कटौती नहीं होगी। पार्टी रुकन असेंबली ने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि वो स्मगलर से मिले हुए हैं। आज की खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV21। अल्लाह हाफिज।